Welcome everyone. My name is Sagar and today we have Shreyaan Daga with us. So मेरा एक माइलस्टोन है कि मुझे बायजूस या अनअकैडमी को खरीदना है. I think you already know him, so there is no need for an introduction. आपको बायजूस का वैल्यूएशन पता है? $22 billion. He was just a normal teenager like us. जब तक मैं इधर 1 billion learners नहीं लाऊंगा ना, तब तक मैं इस पे छोड़ूंगा नहीं. So now let's hear his journey to start a multi-million-dollar company at the age of 18. आपकी क्या उम्र है? मैं अभी 18 साल का हूँ. Oh my God! मैं 8 साल से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में चालू हो गया था. 8 साल से. Wow! So today we have Shreyaan Daga with us and he is the CEO and founder of OLL. So Shreyaan, can you please tell us something about your business? So hello everyone, if you all have not seen us on Shark Tank yet, OLL is one of the India's largest skill development platform for kids in 1st to 10th grade. We focus on affordable quality learning for students. So that's about us. So Shreyaan, how you started this business? So जो शार्क टैंक में दिखा ना वो 2 घंटे का था, बट असल में वो क्रॉप करके उन्होंने 12 मिनट का एयर किया है. And in terms of how I started, when I was 15 years old, like I left home and I took all my belongings. I was inspired by Gautam Buddha and I walked out. And the biggest like life learning I got was when I was giving my belongings away. So wallet, slipper. So जब मैंने मेरा साइकिल एक छोटे बच्चे को दिया, he took the cycle and he said these exact words, भैया मेरा सपना पूरा हो गया. Right? So that's when I found the purpose in life कि मुझे इस बच्चे के जैसे 1 billion या 100 करोड़ बच्चों को empower करना है to dream big and to go towards their potential, give them the capability to achieve those dreams. So that's about my way of how I started. That's amazing. Unbelievable. So how your mind got so matured at that age? I mean, आपको PUBG वगैरह खेलने का मन नहीं करता था? मन तो करता था बट खेलता भी था पहले, लाइक 1-2 बार ट्राई किया, बट बोरिंग था यार, सच्ची में मुझे मजा नहीं आता था. 1-2 बार फ्रेंड्स के साथ वो एडिक्शन हो गया, फिर उसके बाद मजा नहीं आया वो इतना खेलने में. तो You also dropped out of your school, right? राइट. So कौन सी क्लास में? 10th grade के बाद I completely full on in OLL, but I dropped out after. So मैंने OLL जब चालू किया था तब मैं 10वीं क्लास में था. I dropped out after OLL reached a revenue of 1.4 crores in a year. That's when I dropped out, so that I had numbers backing me when कोई पूछता था कि क्यों छोड़ा, I had numbers that prove कि ये देखो इतना कमाया. So why this online learning platform, right? There is so competition in this field, I think. So why you choose to grow in this? अरे कंपटीशन से अगर कोई डरेगा तो कभी लाइफ में आगे नहीं जाएगा. सो ऑन टीवी एज आई सेड आल्सो, व्हाई बी स्कैर्ड ऑफ कंपटीशन. तो you know when I said that I'm going to buy Byju's and an academy, so I'm not scared of competition and no one should be. If you believe in your product, if you believe in yourself, you know you'll never be scared of this. In terms of why this field, I feel कि ये जो field है इधर इसको बिजनेस बना के रखा है ज्यादा से ज्यादा लोगों ने. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मोर ऑन मार्केटिंग ऑफ इट एंड मोर ऑन सेल्स कॉल्स आते रहते हैं. अगर आपने देखा होगा लाइक फ्री डेमो, ये फ्री काउंसलिंग चाहिए, काउंसलिंग के नाम पे घर पे बैठ जाते हैं and आपसे जब तक खरीदोगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर एवरीवन टू लर्न. सो मैंने क्या सोचा कि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इज दैट जो भी सिखा रहे हैं वो लोग सब एकेडमिक्स सिखा रहे हैं. एकेडमिक्स तो स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है, राइट? बट जो स्किल्स जो सीखने की जरूरत है, जो स्किल्स आज की दुनिया में रेलेवेंट है, वो कोई नहीं सिखा रहा है. एंड अगर सिखा भी रहे तो ऐसे ऐसे दी अर्ली प्रॉब्लम्स. सो वी फोकस्ड ऑन जस्ट बिल्डिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर skill development, and we charge around, when we go through schools, it's 80 rupees an hour, right, which is $1 an hour. And हमारे पास कोई sales team ही नहीं है, we don't call, and our digital marketing budget is zero.
we don't spend anything on digital marketing. So if you understand कि हम लोग एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, that's our USP. एक Right. ट्रस्ट है वो, right? Yeah, I also visited your platform and I just saw that 250 for one class. So that's what I think is affordable. So Yeah, online it's काफी B2C. सारे, हाँ, right, right. right. वो जो दिख रहा है वेबसाइट पे वो वन लाइक एक एक बच्चा इंडिविजुअल आता है. जब Yeah, yeah. स्कूल्स में जाते हैं हम 80 रुपीज पर आवर पे प्रोवाइड करते हैं. Okay. So how this business is actually different from others? Like others can also do this thing. So how are you doing different? If they could do it, they would have done it till now. They Yeah, want to more focus on business development and right. marketing. Hmm. It's our USP, right? It's very difficult to get customers without doing marketing, without doing business development, sales, calling. It's Hmm. very difficult to do that. And trust me when I say it, because हम लोग करते हैं, right? ये हमारा USP, बिना बिना एड्स रन किए कस्टमर लाना और उसको रिटेन करना, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके उसको रिन्यूअल लाना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज है, राइट? जो लोग स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये सॉल्व करना है, बट ओवर द टाइम दे गेट कैरीड अवे दैट मुझे पैसा कमाना है, उस पर फोकस चले Right. जाता है. मैं 18 साल का हूं, मैं पैसा कमा के कर भी क्या लूंगा? मैं रोज 7 टी-शर्ट ही पहनता हूँ और रोज क्या घर पे खाना बनता है, पानी मिलता है, रहने की जगह है, तो पैसा कमा के कर भी क्या लेंगे हम? मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे चाहिए कि बच्चे ज्यादा सीखे. That's what I care about. Yeah, amazing. So isme how do you ensure quality? Like I think everyone just they can apply as an educator, right? Right. So there are two ways which we ensure. One is while onboarding the educator. So we have over 15,000 applicants of teachers every year. And usme se like 14,000 are pretty much useless. People who just want to come and explore the platform, etc. उसमें से भी 15,000 में से जो बचते हैं 1,000 1,000 1,500, उन सबके साथ हम लोग इंटरव्यू करते हैं. जो 1,500 बचते इंटरव्यू में we measure the delivery first, means how well can they teach, right? जो एक बहुत ही important factor है, not what they teach but how well they can teach. Am I getting, and all the people who are interviewing are kids, ठीक है? जो इंटरव्यू टीचर का ले रहे हैं वो बच्चे हैं. तो if they are learning properly, that means the teacher will is pass, right? So they are interviewing the teacher. If they are engaged enough, they are learning properly, then the teacher is pass for the first round, right? And then इसके बाद ऐसे 4 rounds होते हैं, from delivery, subject knowledge, technical, etc. एंड उसके बाद टीचर ऑनबोर्ड होता है, तो वो 15,000 में से 150 टीचर्स ऑनबोर्ड होते हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, टू मेक श्योर दैट कि अच्छा क्लास चल रहा है, हम हर क्लास को मॉनिटर करते हैं. एंड हर क्लास को बच्चा ही मॉनिटर करते हैं, लाइक स्टूडेंट आर एज मॉनिटर्स और माई बिलो माई एज मॉनिटर्स, एंड दे गिव फीडबैक टू द टीचर. टीचर हैज टू इम्प्रूव एंड वी गिव रिवॉर्ड्स पॉइंट्स टू द टीचर कि अगर आप ये किए तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा. तो पूरा लीडरशिप बोर्ड है टीचर्स के लिए. सो the teacher who teaches well grows in our platform. The teacher who doesn't teaches well gets suspended. Okay, that's amazing. So what is one of the biggest difficulty or biggest challenge that you faced till now? Mindset. Parents का mindset, Okay. schools का mindset, teachers का mindset, बच्चे का mindset, हर सब जो भी है उसका mindset is the biggest difficulty. Because the thing is, everyone is कि marks important है. Marks के बिना जिंदगी नहीं चलेगी, डिग्री के बिना जिंदगी नहीं चलेगी. So that mindset थोड़ा change हुआ है after Shark Tank, because I have shown an example कि बिना डिग्री भी कुछ कर सकते हो यार. ऐसा जरूरत नहीं है कि डिग्री चाहिए ही चाहिए. And that is something that we have to change across the world, right? वो सबसे बड़ा challenge दिखता है हमें. Amazing. Or after that, what was your family background and how they supported you? Like they In also terms had the of, same mindset, right? right. So in terms of family background, right? मेरे
लाइक 15 साल तक मैं मेरे नाना नानी के यहाँ और मैं ग्रैंड पेरेंट्स का रहा हूँ, because my parents started off as working parents like any other middle class parents are. तो सब काम पे चालू किए, 10 साल उन्होंने काम किया, तो till the 10 years I never met my parents every day, उनको सिर्फ वीकेंड्स पे मिला मैं. And उनके सपोर्ट, like after that they started their own company and then it grew and then they started investing in companies at a point after working for so long, right? So but in terms of उन्होंने मेरी हेल्प कैसे की, सबसे ज्यादा हेल्प की जब मैं छोटा था तब मुझे क्लासेस में भेजे, right? They put me in as many classes as possible, so they put me in chess, dance, art, languages. तो अभी कहाँ काम आता है, जो भी वेबसाइट पे आपको डिजाइन दिख रहा है वो सारा मैंने बनाया, क्योंकि वो मैंने आर्ट जो बच्चे में सीखा वो अभी जाके यूएक्स यूआई डिजाइन सीख रहा हूँ, करके इम्प्लीमेंट किया है. जो भी टीवी पे पब्लिक स्पीकिंग देखा, मेरा अपने स्किल्स, कॉन्फिडेंस देखा, वो सारा आया स्पीच एंड ड्रामा क्लास से. जब मैं छोटा था मेरी नाना नानी ने डाला था, जो लाइक इंस्टेंट कैलकुलेशंस की, ये वैल्यूएशन पे ये अमाउंट ऑफ इक्विटी दे सकते हैं, वो वैदिक मैथ्स सीखा था मैंने जब मैं छोटा था. एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में जब कोई डिसीजंस मेक करते हैं तो आई हैव लर्न चेस. So I always think about 10 moves in forward and then I think of this decision and then play it. So as you can see, there's what you learn as a child, the skills that you learned, the soft skills of it are more important and they get used everywhere in life. So Right. that's the biggest support that they have given me. Right. Amazing. What you were feeling when you were going to Shark Tank? Like you were excited or थोड़ा डर लग रहा था अंदर से? So अंदर से तो डर लग रहा ही था, बट डर एक अच्छी चीज है. आई फील nervousness is good, it makes you perform better. So I was kind of nervous in the start, but जब questions आने लगे then it was pretty much like I answered as per जो इतना practice किया था, on spot answers दे दिए. Yeah, you're amazing. Pitch was amazing. I already saw this. Thank you. Or and what things actually changed after Shark Tank? Honestly, customer support सबसे ज़्यादा, like we've seen an impact, like the people who really want to learn. बहुत सारे calls आ रहे हैं, बहुत सारे WhatsApp messages आ रहे हैं. अभी 10 लोग सिर्फ customer support पे बैठे हुए हैं, right? We're trying to make sure that people are learning. And in terms of we've seen a scale, like we've seen glimpse की scale पे क्या क्या चीजें आएंगे, कैसे संभालना पड़ेगा. So वो scale is the biggest learning for me after Shark Tank. कि how can you handle after scale? And that's really good, a good learning. And honestly, if I say, मैंने इससे पहले OLL का नाम नहीं सुना था, बट जब मैंने इसका प्लेटफॉर्म देखा कि 250 रुपये में एक अच्छी क्लास मिल रही है जिसमें हमको प्रोडक्टिव चीज सीखने को मिल रही है, तो आई वाज जस्ट शॉक्ड एंड आई आल्सो वांटेड टू अप्लाई एज एन एजुकेटर, बट लेट्स सी व्हाट हैपन. Absolutely, sure. Okay, so now I will ask some questions that will help some young entrepreneurs who are watching this video. How to increase your brand value if you are starting? देखो, एक बहुत सिंपल स्टेप्स है. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो किसी की, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और उसके लिए पैसे चार्ज करो. बस ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप. इससे ज्यादा और कुछ नहीं. लाइक लिटरली मैं बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता. लाइक दिस, दैट्स इट. आई मीन इससे ज्यादा और कोई भी नहीं आपको बता रहा. किसी का प्रॉब्लम है, कोई फेस कर रहा है, उसको सॉल्व करो और उसके लिए पैसा मांगो. बस दैट्स इट. That's all, right? So think of it, it's very simple, right? And then it's just about execution. And how to tackle that imposter syndrome, like हम नहीं कर पाएंगे और कोई कर लेगा, हमसे बेटर है वो, तो उस चीज को कैसे टारगेट करें? Believe in yourself. Simple. अभी अगर आप खुद के अंदर बिलीफ नहीं रखोगे, आपके माँ आप पहले तो आपके फैमिली को कन्विंस करो ये करने के लिए. Because if you cannot convince your own family to do this, then how will you convince the world, right? Right. तो पहले खुद के फैमिली को कन्विंस करो कि भाई मुझे ये करना है, right? And if you can convince your family, that means full battle is won.
आप पहले अपने फैमिली को कन्विंस करो कि मुझे स्टार्टअप चालू करना है, ये स्टार्टअप का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एंड ये इतना कमाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। फैमिली कन्विंस हो गई, बस बाकी दुनिया गया भाड़। That's the way you think of it. So, any three advice that you want to give to young Any entrepreneurs? Three advice, three advices? those who are It will starting. starting, right? So listen to people, uh, like not listen to the words, listen to the actions. Okay, means you have to read through the lines what they are trying to tell you, but they cannot put in words. मीन्स कोई प्रॉब्लम वो लोग बता रहे हैं आपको कि ये प्रॉब्लम है मेरे पास, अच्छा आपके फ्रेंड बता रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं, गर्लफ्रेंड बता रही है, माँ बता रहे हैं, बाप बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं. सो लिसन टू देम थ्रू देयर एक्शंस. Okay, that's the first most important thing. Identify the problem. Second is, you solve, but the biggest thing is execute, right? Execution बहुत important है, ये सबसे difficult है. एंड एग्जीक्यूट अगर कर दिया, मतलब डोंट वेट कि हाँ जब इन्वेस्टर आएगा तब पैसा, तब जब पैसा आएगा तब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. डोंट वेट फॉर समवन, डू इट. लाइक नाइकी का स्लोगन है ना, जस्ट डू इट. मैं उसको फॉलो Right. करता हूँ. And third and most of all is find a purpose. Like don't do anything just because पैसा कमाना है या ये करना है. Have a purpose behind it. Personal purpose. Like मतलब मुझे ये एक रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए पर्सनली जो आपको पुश करे. अगर वो पर्सनल रीजन नहीं होगा तो आप एक दो चैलेंजेस के बाद गिर जाओगे या क्विट कर दोगे, बट वो एक पर्सनल रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. Right. Right. Thank you. And now let's have a rapid fire round. So I will just give you one word and you have to reply me with the first thing that comes to your mind. Okay. So first of all, power. पावर. कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, क्या बोलूं. Like it can be some wealth or like bodyguard रखे हैं 4-5, something like this. पावर इज पर्पस, फर्स्ट थिंग इन माय माइंड. जिसके पास पर्पस है उसके पास पावर है. Okay, that's good. And college ड्रॉप life. आउट. Okay. And Godfather मूवी, अमेजिंग movie. मूवी. Okay, yeah, I also. And Shreyaan Daga. ड्रीम बिग. Okay, that's amazing. Money. Just a form of trade. Okay. Fear. Good. Good thing to have. Fear is good. Right. Yeah. And priority. Pardon? Priority. Priority Yeah. is, prioritizing is important. So priority for me is work. Okay. Yeah, that's good. So awesome. मजा है आपसे बात करके. And those who aren't subscribed to his channel, please do. अच्छा रहेगा, इसका भी startup journey at least grow होएगा. So yeah. So I also hope I will meet you someday. I'll have to Done. learn a lot from you. Sure.